Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. This is Friday at 4 and we are going to talk about what's happening with markets. Where is Nifty heading and how it's going to move from here on. सारी चीजें हम देखेंगे and we will understand how we have to trade the markets by looking at why that 55 days time cycle is so important. Some aspect of gain square of 9. ये सारी चीजें देखेंगे. लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप देख रहे, अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए, खास करके ऑप्शंस में पैसा नहीं बना डिस्पाइट द मार्केट इज गोइंग अप, या आपने पुट भी बाय किया तो भी पैसा नहीं बन रहा है, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग दैट सिंपल क्वेश्चन बिकॉज इन दिस मार्केट राइट नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो मोमेंटम. मार्केट में मोमेंटम बना ही नहीं है एंड यहां पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही स्लो मार्केट है. लगता है शायद अभी ब्रेकआउट दे देगा, 18,000 पार कर जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है. ऐसे में चलते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कैंडलस्टिक प्रोफाइल का. मैं वीडियोस भी बना रहा हूं यूट्यूब पे. आई एम नॉट श्योर इफ यू पीपल आर सीइंग मी ऑन द ऑल द वीडियोस ऑन द यूट्यूब दैट आई एम पब्लिशिंग ऑन डेली बेसिस. दैट माइट बी गिविंग यू सम इनसाइट इनटू व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. लेकिन आज अभी चलेंगे बहुत ही क्विकली देखने के लिए कि क्या लग रहा है मार्केट में होगा. सिंपल प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक देखेंगे. विल क्लब दैट अलोंग विथ टाइम साइकिल्स एंड वी विल लुक एट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द मार्केट कि भाई करना क्या है. तो चलते हैं, देखते हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग अक्रॉस माय स्क्रीन वेरी वेरी क्विकली. दिस इज यू कैन सी इट हियर राइट नाउ. और यहां पर हम पहले जाएंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं. वीकली पे बहुत टाइम से हमने देखा नहीं है, सो लेट अस गो एंड चेक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम कि क्या वीक में हुआ. इस वीक में मार्केट में आरबीआई पॉलिसी थी तो क्या हुआ उसके बाद भी. लेट अस जस्ट लुक एट दैट. सो क्या आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन हियर? एवरी वन ऑफ यू, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? सो यहां पर अगर हम देखेंगे, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी शोज दैट दिस candle did not change the three conditions. यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि थ्री कंडीशंस नहीं कंफर्म हुआ है that the trend has reversed on the upside. Can you see that? Now from here, the next candle which was this week, can I say this is again nothing but an inside candle with the high at 7916. तो ये जो बजट के वक्त हाई बना था ना 7970, आई बीन टॉकिंग अबाउट दैट हाई फॉर क्वाइट सम टाइम एंड वहीं पे निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो हाई बनाया और उसके बाद वहां से मार्केट ने कुछ भी नहीं किया. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. और उसके बाद से जो लो बना है, लो इज फार अवे, लेकिन वो लो भी नहीं ब्रेक किया. तो फिलहाल मार्केट प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर बंद नहीं किया. नाउ दैट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन एज ऑफ नाउ, बट ठीक है, वी कैन स्टिल कंसिडर विद इट बिकॉज यहां पर अगर हम देखेंगे बहुत ही सिंपल वे से डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे मार्केट अभी भी उस प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है ऑन द कैंडलस्टिक. सो इफ आई एम गोइंग टू गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी, यू विल बी एबल टू सी दैट वेरी वेरी क्लियरली. एंड यहां पर what is the daily trend? It has protected the prior candle low since around 9 to 10 days now. Okay, since 9 to 10 days now the prior candle low is protected. लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रेशर साइडवेज में हो गया मार्केट और यहां पर ट्रेड बन ही नहीं रहा. If you look at this entire movement has been within this entire candle of the budget day. यहां पर ये हाई था और ये लो था. The entire movement had been in this range of this entire candle. So यहां पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट को कहीं जाना ही नहीं ना. ऐसे में चलते हुए क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? लेट अस लुक एट दैट 55 डेज टाइम साइकिल. वेरी वेरी सिंपली एंड क्लियरली चलते हैं 55 डेज टाइम साइकिल के ऊपर और देखते हैं कि क्या 55 डेज साइकिल के ऊपर से हमें लग रहा है मार्केट क्यों इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है और वो लेवल
नीचे का कौन सा है जिसके नीचे हमें पता चलेगा यार बड़ा ट्रेंड मार्केट का रिवर्स हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू गो टू दिस। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम वीकेंड पे बात करेंगे मास्टर ऑफ साइकिल्स में। मैं यहाँ पे खाली आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ just to show you that how you can apply this correctly. So are you able to see my screen on 55 days time cycle of Nifty? दिख रहा है आपको यहाँ पर? Every one of you, I want a participation so that I know you are there. Otherwise, I'm just talking to a screen without anyone. Okay, so many of you are saying yes. And people who are there on YouTube, if you want to join me on the Zoom platform, you can do that by joining on the Zoom platform. I think the link is shared by my colleague. I'll reshare that across. तो आप यहाँ पर मेरे साथ में Zoom पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट के बारे में बहुत ही सिंपल वे से। I'm going to now take you to something very, very interesting. So यहाँ पर just a second. Okay. यहाँ पर the zone that you see, that's a zone of time. Okay. We are talking about the zone of time cycle. This is the zone of time that we are able to see here. This is the zone of time. And this is the zone of time where we expect positive movement to happen. तो ये जो लो बना है निफ्टी का 17,350 पे, that's a very, very important low. Now that is far away, I understand, but that is the 55 days time cycle which has formed a low precisely at this level from where markets have bounced back on the upside. This level should not breach under any situation. सबसे ज्यादा जरूरी ये level breach नहीं होना चाहिए. So 55 days time is not arbitrary. It's derived out of Hurst time cycle. So is derived from Hurst time cycle का concept. Okay, and you might want to also understand very clearly that basis of this cycle you can take a very informed trade for investment also. यहाँ पर मैं आपको खाली बताना चाहूंगा, if you look at this cycle, low formed here, a rally, low formed here and a rally, low little later and a classic rally, low formed here and a rally, low here and a rally, and we have formed a low and we are already witnessing a rally right now. So this cycle is working exceptionally well on as per 55 days. तो अभी आने वाले वीक में ट्रेड क्या करना है हमें तो मेन देखना है कि भाई what should be the trading in the coming week that we are going to see as of now. From this cycle, if you are looking at it, the low of this candle should not breach. ये बहुत दूर का हो गया, लेकिन इसके पहले अगर मैं एक चैनल बनाऊं, if I go to 1 hour chart, I'll draw one channel which will give a very clear indication that what is the support of the market. So if I go on this channel, I'm going to draw the channel right now here, just a second. So if I connect this low and this low, हम just वहां पर है sideways में, that's the channel that we are seeing. This one, वो spike था, so this is the correct channel that we are seeing. हम just वहां पर है फिलहाल के लिए. So we are standing on a very, very important juncture as per this channel. ये बन गया हमारा zone. So 55 days time cycle के साथ में combining with simple powerful channel, you will get a classic trade setup. Okay, so यहाँ पर आपको ये basis पे क्या लग रहा है? I'm asking you a simple question. If you are looking at this now, what do you think is happening in this sideways action? देखो ना, मार्केट जमानों से उसी लेवल के आसपास घूम रहा है और खास करके इसका मीन जो निकालेंगे ना हम, इसका मीन लेवल जो है 17,756. This is the mean level that we are looking at. 17,756 कौन सा है? 17,756 is the Gann level. So this is the mean around which the market is moving. कल का जो क्लोज था ऐसे देख के लगा कि शायद यहां से बहुत अच्छा ब्रेक आएगा दोस्तों, लेकिन वहां से भी ब्रेक आया नहीं. मार्केट वहां गया, रुक गया और वहीं से आज गैप डाउन होके पूरा दिन टाइम पास किया एंड यू गॉट नथिंग आउट ऑफ इट. सो 17,756 is a Gann square of 9 level, which is absolutely correct.
And यहाँ पर we can clearly see that not a single time markets have decisively able to break that zone. तो अभी कौन से लेवल पे हमें देखना है, इसके हिसाब से कौन सा लेवल है जहां पर हमें ब्रेक चाहिए. We have to look at the higher. Once we see a break above this high, we will get some confirmation. At least कल का attempt था, लेकिन then it again came down. So it's very important that you understand this very, very clearly. These are the zone that I have drawn right now, and within this zone the market is just moving sideways. So ऐसे zone में option trading क्या करनी चाहिए? Option में if you are buying call option, you are not able to make money because there is just no trend in the market. So if you want to trade in the options, the only way to make money is to sell options. So which strike price to select? Fantastic Ayushi, Kiran, exactly, strangle बेच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है विक्स बहुत ड्रॉप हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली बेचना है, फार अवे स्ट्रैंगल बेचना है, नियर वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज के कारण विक्स अभी कम हो चुका है, वोलेटिलिटी कम हो चुकी है. दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन द ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इज द साइडवेज एक्शन. नाउ in this, I would rather select a strike price as far as 18,200 because of wave theory. So agar a wave theory, shall we look at wave theory also? I'm actually going to also speak with fires today at 5 on Elliott wave for 1 hour, agar in case anyone is interested to join that. So wave theory के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है. So let me explain the neo wave here. यहां पर हमने मार्क किया था A, B, C, D, E, F, and this was G. The entire up move was X. From here, we got a move on the downside as A. This is B. This is C. Now, this becomes a very tricky part क्योंकि हमने ये हाई अभी तक निकाला नहीं है. Where since we have not taken out this high, वहां पर हम देख सकते हैं कि it's not going to be resulting into any kind of a sensible up move. So I am cautious now. This can turn out to be, there are two possible scenarios. There are two possible scenarios, which is, this is either wave D, which is still going on, or one of the scenarios, wave D and E is over here like a triangle pattern. And this is the move. But the problem is it's taking too much time now. It has to go up if it has to break out. क्योंकि इतना टाइम अगर लगाएगा तो it becomes tricky. तो alternate possibility क्या open हो जाता है? The alternate possibility becomes that this ongoing move is, this is not D and E, but this ongoing move जो अभी हम देख रहे, this becomes wave D. And post this wave D completion, we might again see a crash, which is similar to the earlier C leg. So this can be an E, then an F, and then a G. So I'm not changing my bullish stand. I'm just saying you this is the possible scenario which is not ruled out क्योंकि ये move बहुत ज़्यादा time ले रहा है. That is what is concerning me as of now. That is what is concerning me as of now. Are you with me? Clear है? So this is how you have to look at it. So यहाँ पर आपको open end रखना है mind, not to be biased. As per the candlestick daily chart, trend positive है. Weekly chart, trend reverse अभी भी positive पे नहीं हुआ है. So there is a conflict that we are seeing right now within this zone. And जब बजट था तब भी मैंने कहा था 17,970 का लेवल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो लेवल नहीं ब्रेक किया तो मार्केट कैन जस्ट डू दिस टाइम पास, एंड टिल देन you can simply wait, either short options to make money, yeah, simply wait for good momentum to pick up. One classic indicator for momentum is KST. That is what you can possibly use as a KST. So that's how you can think of
applying that KST and seeing if the momentum is picking up or not, which is not as of now. Okay, and यहाँ पर are you able to hear me everyone? Because I think someone is not able to hear me clearly. So I'm just trying to figure out if मेरी आवाज आप तक clearly आ रही है. ठीक है, तो अभी चलते हैं ये देखने के बाद में गैन के ऊपर और देखते हैं कि यहां पर क्या लग रहा है. व्हाट इज द गैन स्क्वायर ऑफ 9 लुकिंग लाइक. एंड यहां पर ये चार्ट हम बहुत डिटेल में करेंगे वापस से मास्टर ऑफ साइकिल्स में कल और परसों. लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट पे अभी फिलहाल चल क्या रहा है. सो लेट मी शेयर अक्रॉस माय एमई ब्रोकर स्क्रीन विद द गैन लेवल over here. So if you are seeing this chart, okay, Sagar Mahajan is saying big fan of you, following on Twitter. Thanks a lot, Sagar. Great to know that. Always a pleasure. So अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर you can clearly see this is the 17756 का level. It's not going there. यहाँ से we got a pullback now on the upside. So if we manage to take out the high of the budget day, our next target comes to 18,293. That's the gain level that I'm talking about. Once if we break, so until when is this scenario valid? Until we manage to protect this low. This low that you are seeing here is the low of this candle is 17,652. तो 17,650 का लेवल बचा रहना चाहिए. जब तक 17,650 is intact, we can see and expect a positive breakout. लेकिन फिलहाल तो मैं ऑप्शन बाय नहीं करूंगा. मैंने मॉर्निंग में भी ट्वीट किया था, I am simply selling options to make money from the market because right now buying option is not yielding anything. Do you agree with me, most of you? कि बाय करके कुछ भी नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो सेल करके ही ऑप्शंस में पैसा बनेगा. तो फिलहाल that is what it looks like. And right now for Monday, if we look at Monday, then I need a break above this high which is 17,920. Nifty अगर 17,920 के ऊपर जाता है, then I think we might be heading towards a much higher level, 920 and 970. So 17,920 and 17,970 के ऊपर we can expect Nifty to rally much higher. If it breaks this low, then I will be all back to bearish stand. I will change my stand once the gain support level is broken and Nifty closes below 17,650, then I think this move is again extending further. So देखते हैं, it's too soon to conclude. For now, the best strategy is to be just playing the sideways action. Is it clear? Anyone? Any questions? So this is what we talked about. Fantastic, guys. So I just want to just want to take a few questions, and before that, I am taking a very quick poll. Just want to understand which path you want to be with me for, taking your trading journey to the next level. Because Master of Cycle is starting tomorrow, दोस्तों. कल Master of Cycles की शुरुआत हो रही है. It's going to be simply amazing. You will love it. And बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं 11th 12th, which is tomorrow and day after. Are you excited to be a part of that? We will be looking at it in much detail, minutely. Look at ITC, how classic it went. Look at gold, how superb it went. I have prepared so many stocks, so many charts. I want to share that across, and you will be simply loving the entire concept. If you, in fact, यहाँ पर मैं एक slide बता रहा हूँ आपको, which I'm going to talk on my webinar just at 5, which is on Adani Port के ऊपर है. If you look at Adani Port, this is Adani Port, which was done in the January 2023 before the collapse happened. That this was wave A, the rise is only wave B, and we should see wave C down. C कितना जाएगा वो नहीं फोरकास्ट किया था, C नीचे जाएगा वो पता था. And look at the way Adani stock moved. A down, B complete, and the C classic collapse that we saw on the downside. So the point I'm trying to make is this works. Okay, this is wave theory that I'm talking about. But if you combine this concept of wave theory with time cycle, it is simply awesome. So बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं. तो लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा मास्टर ऑफ साइकिल्स में. We look at simple way of deriving a parameter out of time. RSI का 14 क्यों, ROC पे 28 क्यों लेना है,
मूविंग एवरेज 20 क्यों नहीं लेना है? तो हम खुद का एक इंडिकेटर बनाएंगे, साथ में हम प्राइस फोरकास्ट करेंगे टाइम के साथ में. सो वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स गाइस. तो आज का वेबिनार क्विक शॉर्ट रखा है मैंने, so that you can be with me tomorrow at 10 a.m. So just I'm too excited. For all the mentees who are going to be a part of it, all the Master of Cycle participants, it's going to be simply awesome. Okay. Thank you very much for joining here. Now I am simply signing off. Thanks for being a part of this. And if you have any questions, just drop me an email on the link which is shared across. So I'm ending the poll now. Okay, there are so many questions that are coming up. Let me just take up few questions before I end up this session. Will the tomorrow session have break in between? Yes, we will have that break. Of course, यार 6 घंटे मैं continuous तो बोल नहीं सकता, तो break तो लेंगे दोस्तों बीच में. So don't worry on that. We will have that break. Next auspicious time to buy. I will let you know Akshay tomorrow. Much detail about Nifty, Bank Nifty, natural gas पे मैंने apply किया था. I was making all the presentations and the charts for tomorrow. Wow, you will be shocked when I reveal that natural gas का chart to you all कि क्या cycle चल रहा है gold के साथ में. Superb है. Gain level work perfect. Thank you very much. And March would be revising tomorrow's content. Yes, of course, in the March mentorship में. So we will be discussing clearly about those things. So बहुत सारी चीजें. शालिनी, welcome on board. Fantastic to see you also on board. So बहुत सारी चीज करेंगे. आज थोड़ा सा short रख रहा हूँ, मैं ज्यादा detail में नहीं जा रहा because I have another webinar at 5 with Fires. I'm going to speak on Elliott for an hour. So thank you very much guys for joining in. It's fantastic to have you all there. Excited to be a part and speaking on Master of Cycles. Have a wonderful day. Become a wonderful trader. आने वाले वीक में मंडे को मैं ध्यान रख रहा हूँ फर्स्ट आवर ओपनिंग कैंडल क्या है और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड डिराइव करने वाला हूँ. तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो मुझे ट्वीट करिए @kyal_ashish पे. I'll be more than happy to help you out with anything and everything. Ashish Kyal signing off for now. Thanks a lot.